Assalamualaikum friends, I hope you've all been incredibly well inshallah. So welcome back to the long form content. हमने बड़ी देर से ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई थी जिसके अंदर हमने बैठ के ऐसे आराम से बात की हो। काफ़ी ज़्यादा हम लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे थे, लेकिन आज इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि आई शेयर विद यू दी आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट यू सेंट इन ओवर ऑन इंस्टाग्राम, ओवर ऑन यूट्यूब, और आपने काफ़ी सारे सवाल भेजे एंड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा टू गेट टू ऑल ऑफ देम, बट हो सकता है कि चंद कुछ मिस आउट कर दूं और चंद कुछ बल्क में आंसर कर दूं। काफ़ी सारे सिमिलर टाइप ऑफ सवालात आए हुए हैं एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। अब पहला सवाल ये है कि प्लीज ब्रो टेल मी हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव पीपल एंड टॉक्सिक पीपल इन लाइफ व्हिच दे अपसेट बाय देयर एक्शंस, जेलसी एंड टॉक। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि देयर विल ऑलवेज बी समवन हु इज़ गोइंग टू टॉक नेगेटिव अबाउट यू, चाहे आपका मैसेज पॉजिटिव हो, डिलाइटफुल हो, नेगेटिव हो, जिस तरह का भी आपका पैगाम होगा, जिस भी इमोशन को इवोक करने का, देयर विल ऑलवेज बी समवन हु इज गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट इट। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस अपने एजुकेशनल बिजनेस के अंदर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस अपने ऑफ कोर्स इस्लामिक कंटेंट के अंदर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस इन माय एजुकेशन इटसेल्फ, नॉट माय एजुकेशन बिजनेस बट माय एकेडमिक लाइफ इटसेल्फ। So there will always be someone who is going to say things which may affect you negatively. मेरी recommendation इसके अंदर आपके लिए टू फोल्ड है। नंबर वन, आप कोशिश करें कि आप उनसे बात करें कि यार देखो, this is what I'm feeling, this is what I think is happening, कि मेरे दोस्त हम लोग जिस तरह से बात करते हैं मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि ना मेरे लिए पॉजिटिव है ना आपके लिए पॉजिटिव है। अगर उस चीज़ को वो सुनने के लिए तैयार हैं तो आपको उनसे मोस्ट डेफिनेटली बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ताल्लुकात काटने में आपके लिए इमीडिएट फ़ायदा नहीं होता। नंबर टू, मेरी रिकमेंडेशन ये आपके लिए कि अगर वो लोग नहीं रेडी होते उस केस के अंदर, ऑफ कोर्स इफ देयर इज नो राइट ड्यू ऑन यू फ्रॉम देम, यू स्टार्ट डिस्टेंसिंग योरसेल्फ, राइट? यू स्टार्ट डिस्टेंसिंग योरसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ यू नॉट टॉकिंग डीपली विद देम, यानी जो डीप कनेक्शन है वो ना हो। लेकिन एक मुसलमान के राइट ऑन अनदर मुस्लिम इज ऑलवेज ड्यू। हमें ये भी नज़र आता है कि आई बिलीव हसन या हुसैन रदियल्लाहु अन्हु थे और उनके एक दोस्त थे हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द वॉर विद अली रदियल्लाहु अन्हु, और उसकी वजह से जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे दे हैड अ क्लैश, बट उनके जो राइट्स थे, कॉर्डियली सेइंग अस्सलामुअलैकुम, हैविंग सलाम टुवर्ड्स देम, उनके बारे में बुरा ना बोलना, ये राइट्स उनके पास फिर भी रहते हैं और आपको ये निभाने पड़ेंगे। अब अगला सवाल है, हाउ कैन आई सजेस्ट समवन टू गिव अप ए हराम रिलेशनशिप एंड हाउ टू हेल्प देम? टॉकिंग अबाउट माय सिस्टर, इट हर्ट्स मी एवरी टाइम आई सी हर टॉकिंग टू दैट गाय। देखिए, यहाँ मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप अपनी बहन से बात करें और एक प्यार के लहजे में बात करें। यू डोंट टॉक स्ट्रिक्टली अबाउट दीज थिंग्स इन द फर्स्ट प्लेस, कि आप उनको बताएं कि out of love for you, I don't want you to do this because this is harmful for you. This is harmful for you because ये जो आदमी है या ये जो बंदा है, he doesn't really want to add value to your life and he doesn't really love you. क्योंकि अगर वो आपसे प्यार करता होता, सबसे पहले तो what he would have wanted for you is eternal happiness and eternal joy, which is of course not within this dunya but within the akhirah, within al-jannah. So he would never have participated within a haram relationship with you. Or number two, a haram relationship, in my opinion at least, and what I've seen, is never about love in truth, because there is no sacrifice, there is no commitment. You really can't commit or sacrifice to anything because all you're really doing is just chatting away, right? Typing away. And what that's doing is not building between you a good relationship, but it's just wasting your time, taking away from you from being high value individuals. क्योंकि अगर आपने जो अब वक्त आप चैटिंग की तरफ लगा रहे हैं, राइट, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, आवर्स अपॉन आवर्स, अगर आप ये वक्त अपने ऊपर लगाते हैं, perhaps learning about the thing, perhaps learning a skill such as AI, such as freelancing, such as content writing, अब तो इतनी सारी चीज़ें where you can earn or where you can add value to yourself as a person, because remember, ये जो चीज़ें होती हैं, these build internal confidence. So if you did that, how much greater, better inshallah of a person would you be in comparison to you spending your time here? Just imagine that for a second. अब अगला सवाल है, how to give up sins, how to come to Allah. I have been wanting to do it for a long time and I feel guilty, but I just can't seem to make any progress. इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले तो ये कहूँगा कि you have made progress, क्योंकि इससे पहले कि आपने सोचा था आई वॉन्ट टू मेक प्रोग्रेस और आई
feel so guilty. Did you feel guilty before this? I don't think you did, right? So if you didn't, you have made progress. Allah Mubarak, you're on the right path. Now what I would suggest to you inshallah is, आपने ये देखा है कि आप, say for example you listening to music, say for example you're talking to someone who you shouldn't be talking to, right? Say for example you're backbiting. अब इन चीज़ों के अंदर when you look at them and you see sin, that's a good thing. That means you have a beating heart. So what I would suggest to you here is, अब आप steps लेना शुरू करें towards Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1 is maintain your salah. अपनी जो salah है, your prayer, never ever leave it, right? You want to do your best to at least pray the fard. आपने नमाज पढ़नी है, आपका दिल नहीं कर रहा कि आप एक्स्ट्रा पढ़ें, just pray the fard. It will suffice for you, and inshallah try and increase it as you get nearer to Allah subhanahu wa ta'ala. You will yourself want to, I believe you will. क्योंकि अगर आप ये सवालात पूछ रहे हैं, that means you are inshallah very near to it. Number 2, आप sacrifice करना शुरू करें for the sake of Allah, which is कि अगर आपने देखा कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, you delete it. या सुन रहे हैं, you delete it. You see that you're talking to a person, you block them. आपने hard line stance लेना है कि I am not even going to go near that sin. क्योंकि इस्लामिक टेक्स्ट हमें ये चीज़ें बताती हैं कि you are not even to go near sin, right? That's what it recommends because it knows the nafs. It knows कि अगर आपने देखा कि वहाँ डांस पार्टी हो रही है या आपने देखा वहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है, तो you're going to think to yourself कि maybe I should go in there and check out what's going on, right? So you don't even go near sin. You create a friction between yourself and music. You create a friction between yourself and that person or any sin that you have. और जब वो एक दफ़ा friction create हो जाएगी ना, so you won't have that particular stimulus immediately available, and that is what's going to help you. Because अब for example आपके पास Instagram immediately available है on the main page of your phone. You're going to open the lock and you're going to know where it is. You're going to click it or you're going to start scrolling. As opposed to that, if you had Instagram in a place where you did not know it existed and you would have difficulty in reaching it, on multiple clicks के अंदर, perhaps you would have thought कि I should not be scrolling. सवाल है, which is the first evil or bad habit which you would like to eradicate from society or Pakistan? अब इसके अंदर जो मेरा जवाब है, it's going to be a bit concise because I have actually thought about this, and this is injustice, right? Or the lack of justice. क्योंकि मैंने ये देखा है और मैंने इस्लाम भी हमें ये बताता है कि अगर एक ऐसा मुआशरा है ना जो कि मुस्लिम है लेकिन वो नाइंसाफ है, तो अल्लाह उसे बिठा देगा, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल पुश इट डाउन. लेकिन अगर एक काफिर मुआशरा भी है ना एंड वो मुआशरा जस्ट है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उठा देगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल रेज ए काफिर जस्ट मुआशरा एंड लोअर ए मुस्लिम इनजस्ट मुआशरा. तो हमारा जो दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, इट टेक्स इनजस्टिस वेरी वेरी सीरियसली टू द पॉइंट वेयर आपका जो जस्टिस का आइडिया है, इट इज़ इवन इन टेलिंग द ट्रूथ कि द अदर पर्सन डिजर्व्स द ट्रूथ फ्रॉम यू, वेदर यू आर अ मुस्लिम और ए नॉन मुस्लिम. उनके पास ट्रस्ट होना चाहिए इफ़ यू आर अ मुस्लिम दैट यू विल टेल द ट्रूथ. एंड इन द पास्ट दिस इज हाउ इट्स बिन. दिस इज हाउ पीपल कन्वर्टेड. इट wasn't all by the sword. It was Muslims acting upon the principles of Allah subhanahu wa ta'ala and converting through that multiple, the entire populations, kings into the fold of Islam. अब अगला सवाल है, I always pray to Allah when I worry about my future. I feel relief, but sometimes I fear, what if Allah doesn't know me or is angry with me? What if He does not help me? I can't survive without Him. अब एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अल्लाह मुबारक, द वर्ड्स दैट यू स्टेटेड हियर, आई डू बिलीव अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज ऑफ यू. क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि व्हेन आई एम वरीड आई प्रे, तो इसका मतलब ये है कि यू आर डूइंग एग्जैक्टली एज द सुन्ना सेज. क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बताया जाता है कि जब भी वो वरीड होते थे या कोई ऐसी चीज़ होती थी विच वुड ओवरटेक हिम इन थिंकिंग, ही वुड गो टू सलाह and he would perform prayer because that was his solace. That was where he would alhamdulillah rabbil alamin find safety, find contentment. तो सबसे पहले तो you are doing it by the sunnah naturally. और दूसरी बात ये है कि you are saying that you can't survive without him, and then you're also saying that you don't have a relationship with him. क्योंकि एक हदीस कुदसी है जो कि कहती है कि Allah subhanahu wa ta'ala has told us कि by
My glory, I will not combine two fears or two assurances for my slave. If he feared me in this world, यानी अगर उसको मेरे से इस दुनिया में खौफ था, I will grant him safety on the day of judgment. And if he felt safe from me in this world, I will make him fear me on the day of judgment. अब अगला सवाल है, I believe in opposite gender friendship for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. I know it's wrong, but I'm not able to. My iman has become so low after Ramadan. How to come back? मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये जो particular friendship है, leaving it is difficult. But it's good that you have firstly acknowledged that you know it's wrong. You know it's haram, right? So that's step one. Now here's step two. क्या आपको in the future when you choose your spouse, let's say, right? Would you like for them to have friends of the opposite gender? Is that something you would be okay with? Or would you like for your children or your sister or anyone within your family to have friends of the opposite gender, which could result for them in this world in inappropriate affairs and also on the Yawmul Akhirah in something that could catch them? Would you want that for them? क्योंकि अगर आप इसको देखती हैं as something which is haram, which is sinful, then verily you would know that it is not appropriate and you would not want this for the people that you love. So if you would not want it for people that you love, why would you want it for yourself? अब आ जाते हैं how to come back. अब मेरे experience में at least how I've seen it, coming back to Allah subhanahu wa ta'ala is a very very smooth road. It is a smooth road where of course आपको थोड़े hurdles आएंगे, थोड़े bumps आएंगे, but generally it's going to be where the path is going to be made easier for you if you pray for it. path को बनाने के लिए मैं आपको recommend ये करूँगा कि you cut it off directly from the source. So you go and you tell them that I am doing this for the sake of Allah. I am not listening to what arguments you have against it or for it. ये करूँगी Allah subhanahu wa ta'ala के लिए, करूँगा Allah subhanahu wa ta'ala के लिए, and I am not going to look back. I don't want you to feel hurt by this. I am not doing this to personally offend you or because I hate you, but I'm doing this because I love Allah subhanahu wa ta'ala and I know that He'll reward. अगला सवाल है, as a brother of your sister, what do you expect from her or what good things do you want to see in her? Well, as a brother of my sister, inshallah, I would like to see within her or I would like for her to see for herself a few things. Number one, कि जो modesty है, it is a good thing, that it is something that adds value to her character and it is something that allows her to add value to everything around her. Modesty is always good because everything that is valued is always hidden. अब दूसरी चीज जो कि मैं चाहता हूँ कि वो समझ जाए is that हमारा जो दीन है इसका पैगाम ही truthfulness, honesty, piety का है, and that adds enormous value to society because that's what you'd like to see, right? You'd like to see the people that you love, right? My sister, my mother, my father, everyone that you love adding value to society. That's the end goal. Or number three, I would like for her to realize the truth of Islam through her own eyes, right? Because of course, this is something that I realized for myself कि यार ये चीज़, this is the haq, this is the truth, alhamdulillah. और ये जो एक conviction होती है ना जिसकी आपकी अपनी realization के through जो आती है, that's incomparable, कहीं और से नहीं आती. So I want her to, may Allah allow it, I want her to recognize this because that is what will steer her towards Jannah and that's exactly what I would want for her. You know, you can't really desire anything better than Al-Jannah for someone that you love. अगला सवाल है, I want to ask, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, आप उस तक निकाह के लिए अप्रोच करें, फिर आपको पता चले कि उसका रिश्ता किसी और से हो चुका है लेकिन दिलो दिमाग से वो जा ही ना रहा हो, तो जहन में सजदे में ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए यार, मैं आपको रेकमेंड यहाँ पर ये करूँगा कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ. मैं आपको इस चीज़ का किस तरह से ये बात समझाऊँ, राइट? आई डोंट नो इफ यूर मैन और यूर वुमन, बट इफ यूर मैन, लेट मी गिव यू एडवाइस मैन टू मैन इंशाल्लाह. अगर आपने अपने ऊपर फोकस किया, आपने अपने ऊपर बेहतरी आप लाएं अपने अंदर, यू गो टू द जिम, you start focusing on your passions, you start building something, whether it's online or in person or offline, whatever it is. You start gaining confidence to the passive success that you're in, alhamdulillah, through the aid of Allah having. I promise you, you will find people of value reaching out to you, and of them will be women of value. I promise you that. So go ahead, try this for a few months, for
अ ईयर में भी, राइट? अगर 1 साल के अंदर या 5-6 महीने के अंदर आपको चेंज नहीं नज़र आता, देन यू कैन से कि शाहिन भाई आपने मेरे से झूठ बोला था। लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई विल टेल यू एज ए लिव्ड एक्सपीरियंस। इफ यू फोकस ऑन योर सेल्फ, you will get people of value reaching out to you. Salam, could you please tell me how you became fluent in the English language? My parents recently changed my school from Punjab board to Cambridge because they want me to pursue OA level, but I am not fluent in English. This has lowered my confidence and has made me insecure. यार अब मेरी बात सुने कि यहाँ पर वालेकुम अस्सलाम। एक बात आपको यहाँ समझनी होगी कि जैसे मेरी इंग्लिश जो है ना, राइट, मेरी जिस तरह की मेरी अंग्रेज़ी है उसके अंदर जो फ्लुएंसी है ना, उसी तरह की फ्लुएंसी मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह मेरी उर्दू के अंदर आए, और वो अभी नहीं है और आपकी होगी। तो आप उर्दू में मेरे से बेहतर होंगे, और आप जिस तरह से अभी अंग्रेज़ी लिख रहे हैं ना, मैं उर्दू लिखने की कोशिश या उर्दू लिखने की प्रैक्टिस भी कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी उर्दू भी बेहतर करना चाहता हूँ। तो ये एक खामी है जो मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि मेरे अंदर है। तो अब इस खामी को लेके अगर मैं उसको बेहतर कर रहा हूँ ना, आई हैव नथिंग टू बी इनसिक्योर और नथिंग टू बी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट, क्योंकि मैं उसको बेहतर कर रहा हूँ यार। अगर आप मेरे से पूछे ना कि ये मेरी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फ्लुएंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी मेरा ख्याल है इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए आई वॉज इनकरेज्ड टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि एवरीवन डीम्ड इंग्लिश एज द सुपीरियर लैंग्वेज। तो जैसे कि अभी आपने देखा है, मैं बस शिफ्ट करता रहता हूँ उर्दू और अंग्रेज़ी के बीच, और मुझे खुद नहीं समझ आता कि कब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, कब मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, और ये एक बड़ा मसला है, और इंशाल्लाह ये ठीक मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको इसको लेके कभी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे से बेहतर हैं, अल्लाह मुबारक, इंग्लिश लिखने में भी, उर्दू में भी, और उर्दू ऑफकोर्स बोलने के अलावा लिखने में भी। आपके पास इंशाल्लाह कुछ भी इनसिक्योर होने के बारे में नहीं है, क्योंकि अल्लाह मुबारक आपने अंग्रेज़ी जिस तरह की लिखी है, that's great, right? So you're already good in writing English. अब आप उसकी बोलने में भी फोकस करें, so you're getting better at that as well. And 3 and 4 आपकी उर्दू की लिखाई और उर्दू की पढ़ाई मेरे से अल्लाह मुबारक इंशाल्लाह बेहतर होगी, right? So you don't have to be insecure about these things, because verily these are just things जो कि society ने imagine की हुई as superior, but truly they're not. Don't imagine them as being so. अगर आपकी उर्दू मेरे से बेहतर है, well you're better at me at something that I want to be better at. और इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होने को आ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इन, फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट, एंड आई अपोलोजाइज अगर आप लोग के जो सवाल हैं वो रह गए हैं। इंशाल्लाह अगले Q&A के अंदर, विच वी विल बी डूइंग वेरी सून, परहैप्स इवन नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब मेरे फाइनल्स इस हफ्ते आ रहे हैं, एंड आफ्टर द फाइनल्स आई विल बी फ्री इंशाल्लाह। तो वील बी हैविंग दीज लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशंस मोर, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ऐसा कोई कंटेंट बनाएं जहां द अटेंशन स्पैन इज रियली बीइंग चैलेंज्ड, और रादर इट्स बीइंग बेटर्ड इंशाल्लाह, राइट? और हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन भी होल्ड करने का वक्त है, इंस्टेड ऑफ जस्ट 60-second वीडियोस। बट विद दैट, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द Q&A, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, स्टे फिट, अल्लाह।